Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, students? Today you are going to have your first online English language lecture. Alright, sir. Now let's turn to page number 77. And today we are going to learning about language, indirect speech. What are we going to learn about? Indirect object. Indirect object. Now let's read. You have already read about verb and their direct object. Alright, there is another kind of object which sometimes appears in sentences. This is called the indirect objects. Alright, we have already read about the verbs and their direct objects. Let's suppose I eat apple. I eat apple. The eat is in verb and apple is a direct object. That's simple. Now it says कि today आज जो है हम indirect objects के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? Indirect objects. Alright, here is some examples, but before reading the examples, I want to show you another examples for indirect objects. Let's suppose अगर मैं कहूँ कि जो है indirect objects उसे कहते हैं जिसके होने ना होने से जुमले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जिसके होने ना होने से जुमले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे कहते हैं indirect objects. Let's read this example. ठीक है. John bought his son a present. John bought his son a present. ठीक है. अगर मैं कहूँ John bought a present, जॉन ने जो है अपने बेटे के लिए एक तोहफ़ा ख़रीदा. और अगर मैं कहूँ जॉन बॉट अ प्रेजेंट, जॉन ने एक तोहफ़ा ख़रीदा, तो क्या ये जुमला गलत है? नहीं, ये बिल्कुल जुमला ठीक है. तो जो हिज सन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे. किसके लिए ख़रीदा? किसी अपने बेटे के लिए. अगर वो अपना बेटे का नाम मेंशन नहीं भी करता तो ये जुमला ठीक होता. इसको ही इसी तरीके से इस जुमले को हम हिज सन जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया या डिटेल बताई उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ प्रेजेंट. जॉन बॉट अ प्रेजेंट. अच्छा, अब इसके अंदर जो बॉट है, बॉट क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास वर्ब. वर्ब क्या है? कौन सा वर्ब है? किसका वर्ब है? ये हमारा पास्ट टेंस है बाय का. बाय इज़ अ फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, एंड बॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म. जॉन बॉट हिज सन अ प्रेजेंट. हिज सन जो है वो क्या हो गया हमारे पास? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड. और जॉन क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है. ठीक है. और प्रेजेंट क्या है हमारे पास? प्रेजेंट मतलब तोहफ़ा, गिफ्ट्स. ऑलराइट, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? जिसके लिए हम बात कर रहे होंगे. ठीक है. Now let's read the second example for you so that you can understand. Now here I'm giving you another examples of direct object and indirect object. A direct object received the action of verb. If you can see here, I'm reading. A direct object receives the action of a verb. Direct option क्या होता है? Action direct receive करता है. It answers the question of what and who. Let's suppose अगर हम यहाँ पे example पढ़ें, subject plus verb plus direct object. Ella bought a meat sandwich. Ella bought a meat sandwich. ठीक है. Ella ने क्या खरीदा? मीट सैंडविच खरीदा. ठीक है. सिंपल है. जैसे I bought an apple, I ate an apple, like that. ठीक है. अब इन above sentence meat sandwich is the direct object. Obviously अभी मैंने आपको वह भी बताया कि it's a direct subject. कोई भी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, it's a direct object. As it is answer the question, what did Ella buy? What did Ella buy? अगर हम इसको क्वेश्चन में भी करते हैं तो इस तरह से कहेंगे What did Ella buy? एला ने क्या खरीदा था? Ella bought, एला ने खरीदा था meat sandwich. Now let's read for the second example. Subject plus verb plus direct object. I met Anna, like that. Now let's move to the second part. It's indirect object. An indirect object is the recipient of a direct object. It informs to whom or for whom something is being done. Examples: subject plus verb, subject plus verb plus indirect object and plus direct object. Let's see. Jeremy bought his grandfather a walking stick. Oh, that's so generous of him. Jeremy bought his grandfather a walking stick. You know,
लाठी जेरेमी ने जो अपने ग्रैंडफादर को क्या ला के दी, वॉकिंग स्टिक। अगर मैं कहूँ, अगर लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से ये इरेज कर दूँ, जेरेमी बॉट अ वॉकिंग स्टिक, क्या ये गलत हो जाएगा सेंटेंस? ऑफ कोर्स नॉट, but we added indirect speech to correct the sentence, or you can say explain or describe the verb. So क्या है ये? indirect object है। क्या है? इस grandfather, उन्होंने इसके बारे में बताया कि किसके लिए खरीदी। It's called indirect object। ठीक है, अब आपको समझ में आया? In this example, his grandfather is in this example, his grandfather is the recipient of the walking stick. Hence, his grandfather is the डायरेक्ट स्पीच। ऑलराइट, चलिए अब हमें अपने सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हमारा सवाल है, आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मार्क देम एज बिलो। ठीक है, कह रहे हैं कि आपके जो सेंटेंसेस पीछे पेज पे हैं उसमें जो है आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करना है। कैसे करना है? सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि वर्ब को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन। वर्ब को आपने क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ देख सकें, वर्ब को अंडरलाइन करना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, वी नो इट नाउ कि व्हाट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड उसको डबल लाइन से करना है। एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको सर्कल करना है। सो नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स, एंड दिस टाइम आई विल नॉट शेयर द आंसर। यू ऑल हैव टू लिसन द लेक्चर केयरफुली and write down the answers and do it on the spot while I am reading them to you. Alright, number 1, Samir told us a story last night. Samir told us a story last night. अच्छा, अगर मैं इसमें सेंटेंस में से us हटा दूँ तो क्या ये सेंटेंस गलत होगा? If I remove the us in this sentence, will this be wrong? Of course not, because us is a indirect object. So what it is said in the last page? It says circle. Circle, you can say circle the indirect object. Alright, so you have to circle the object us. Samir told. What is told? Told is a verb, and it says underline the verb. Underline the verb, circle the indirect object, and double line the direct object. Alright, so you have to underline the word told, because told is verb and us is indirect object and story is direct object. Alright, same like in the second sentence, my uncle sent me a calendar for Christmas. Alright, my uncle sent is a verb, underline it, and me is a indirect object, a calendar for Christmas. Number C, the lady showed her son the present. The lady showed her son the present. Showed is a verb, her son is indirect speech, indirect object, and the present is direct object. Same like in the statement number D, the builder built. Built is a verb, the builder built. Build is a indirect object, a building is a direct object. In number E statement, when the principal left is the verb, alright, underline the verb. The principal left the school, the teacher gave him a clock. The principal left the school, the teachers gave him a clock. Alright, so the left is a verb, and what did the principal left? What did the principal do? Principal left the school. The school is the direct object, and the teacher gave him a clock. The teacher gave him a clock is a indirect object. ठीक है, the school is a direct object, and the teacher gave them a clock is a
indirect object. So underline, circle the word